Hello all, welcome to my YouTube channel. And today I will going to start the MQ series. Last lecture I have taught you about the what tool we are using in the MQ and what tools we are going to be studying. In from this lecture onwards, we are going to start so the MQ, what is MQ and everything in details, and we will going to read these all thing in details. Let's first start from what is IBM MQ. IBM ने जो था दिया था आपको MQ इंट्रोड्यूस किया था और IIB MQ इज ए टूल जो कि हम लोग यूज करते हैं मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। MQ स्टैंड्स फॉर द मैसेज क्यू। मैसेज क्यू मतलब एक ऐसा क्यू जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं MQ। नेक्स्ट, IBM MQ सपोर्ट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, सिस्टम, सर्विसेज, फाइल्स बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज डाटा विया मैसेज क्यू। मतलब कि IBM जो का MQ है, कोई एक सिस्टम से, कोई एक सिस्टम A है, वहाँ से कोई हमको मैसेज को अगर ट्रांसफ़र करना है तो हम MQ की मदद से किसी दूसरे सिस्टम B को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे सिस्टम B को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि IBM MQ जो है वो सपोर्ट करता है कोई दो एप्लीकेशन, बिटवीन एप्लीकेशंस, बिटवीन दो सिस्टम्स, कोई भी दो सिस्टम्स है, कोई दो सर्विसेज है, या फाइल्स को अगर अभी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजते हैं तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम भेज सकते हैं भैया मैसेज क्यू। ठीक है, मैसेज क्यू MQ स्टोर्स मैसेज सेंड बाय प्रोड्यूसर सो दैट दे कैन डिलीवर टू द कंज्यूमर। मतलब कोई एक जगह से मैसेज, अगर कोई यहाँ मानते हैं ये है एक प्रोड्यूसर है जो कि मैसेज को वो जनरेट कर रहा है, तो MQ की मदद से हम इसको सिस्टम B को भेज सकते हैं जो कि एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब इसको मैसेज ये चाहिए तो हम ये B को सिस्टम को भेज सकते हैं, सिस्टम A से सिस्टम B के थ्रू। ठीक है, इसको भी डिटेल हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, उससे पहले हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होता है। क्यू क्या होता है, मैसेज क्यू क्या होता है, एवरीथिंग वी विल स्टडी। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज क्यू मैनेजर, क्योंकि क्यू मैनेजर इज हेड ऑफ एवरीथिंग। क्यू मैनेजर इज द हेड ऑफ ऑल। जितना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्यू वगैरह जो भी है उसका से चैनल, उसको से पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, मतलब क्यू के टाइप्स, उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, स्ट्रिंग वगैरह, एवरीथिंग वी कम्स अंडर द क्यू मैनेजर। ठीक है, ओके। तो क्यू मैनेजर इज द हेड ऑफ ऑल एवरीथिंग लाइक टॉपिक, क्यू, सब्सक्रिप्शंस कम अंडर दिस। जितना भी चीज़ है सब चीज़ जो है क्यू मैनेजर के अंदर ही आता है। क्यू मैनेजर के अंदर एवरीथिंग कम्स अंडर क्यू मैनेजर। क्यू मैनेजर के अंदर में टॉपिक, क्यू, सब्सक्रिप्शन सब सारा चीज़ आता है। क्यू मैनेजर इज ए सिस्टम प्रोग्राम डेट्स प्रोवाइड द क्यूइंग सर्विस। क्यू मैनेजर अगर नहीं रहेगा सब चीज़ कुछ भी नहीं मतलब कम कर सकते हैं। तो क्यू मैनेजर एक प्रोग्राम है जो कि डिजाइन किया गया है IBM द्वारा, जो कि हमको क्यूइंग सर्विस मतलब मैसेज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को भेजने में हमको मदद करता है। अगर क्यू मैनेजर अगर हम काम नहीं कर रहा है तो मतलब कि कोई भी चीज़, क्यू, टॉपिक, सब्सक्रिप्शन कोई काम नहीं करेगा। क्यू मैनेजर इज कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्यू मैनेजर सारा चीज़ कंट्रोल करने का क्षमता जो है क्यू मैनेजर के पास ही है। जैसे क्यू को कंट्रोल करना है, क्यू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यू के ऊपर पूरा अपना फोकस जो है, चैनल को कंट्रोल क्यू मैनेजर नहीं करेगा, लिसनर को कंट्रोल क्यू मैनेजर करेगा। एवरीथिंग जो है, जो इतना भी चीज़ है वो क्यू मैनेजर के अंदर में आता है। क्यू मैनेजर ही इज द ऑल हेड ऑफ फॉर दिस। ठीक है, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्यू मैनेजर। क्यू मैनेजर के अंदर हम कोई भी चीज़ हमको क्रिएट करना है, क्यू क्रिएट करना है, टॉपिक क्रिएट करना है, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करना है, हमको चैनल क्रिएट करना है, हम क्यू मैनेजर के अंदर ही क्रिएट करेंगे। क्यू मैनेजर इज द हेड ऑफ ऑल, ऑलरेडी रह चुके हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे जो है क्यू मैनेजर क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट ए क्यू मैनेजर। दिस इज द IBM MQ एक्सप्लोरर।
You when you search the MQ, you get the WebSphere MQ Explorer, and I have opened this, and from there you can create the queue manager, queue and everything. The first I covered the topics. What is the IBM MQ? And you know the IBM MQ they used to transfer the message from one system to another system, also transform the message from one format to other format, like the XML to JSON, IDOC to JSON, and so many documents format from one system to other system. It used to transfer. Uh, if you use any system, the system A, and if you want to transfer to system B, then you use MQ, and MQ is the most important tools we use to transfer, having the security and everything facility used. Then after we know the what is the queue manager, the head of everything, and everything is like the topic subscriptions, channels, and this just comes under this, and we creates the object inside the queue manager. Let's create first the queue manager, then we see it how to create the queue manager. तो क्यू मनाger क्रिएट करने के लिए आपको क्यू मनाger यहाँ पर दिया हुआ है, इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के बाद न्यू के बाद क्यू मनाger, न्यू के बाद क्यू मनाger. Let's name it. I am naming the first queue manager as QM1. Then everything, let's set a default. Go to next. Everything let is default. No need to change anything. This is the listener port. You have to change for the. This is the listener port we used for different queue manager. It is different. For one queue manager, it is you can define any listener port as 14141416, everything, any number of 4 digit number you can define. But for different queue manager, okay, if you are creating the 3 queue manager 1, queue manager 2, queue manager 3, then listener port should be different for the all 3 queue managers. Okay. So I am first defining for this is 1414, and then I am clicking on the next, and then it is finished. You can see here queue manager creating. You can see here logs. Also logs is giving that it is creating like that. Let's it create and wait till that it's to be created. Let's wait to create. Let's wait. It's creating. You can see here the queue manager has been created. It's written as queue manager created, and 0 failed, something like that. It is starting after when we click on the queue manager create, then it automatically starts the queue manager, and it is starting something like that, and it's accepted something like that, and it now queue manager created. You may see here is the queue manager what I have created. If you see in the side the queue manager, there is the queue, topic, subscription, channel, listener, services, process define, name list, authentication information, and communication information. Everything is present inside it. And this I already given you the lectures that the queue manager is the head of all, and everything comes inside the queue manager. You know that. So this is the queue manager. Let me demonstrate you. If the queue manager is down, then can I able to see this? I already हमने तुमको बोला कि क्यू मनाger अगर डाउन रहा, क्यू मनाger के अंदर सारा कुछ होता है, क्यू मनाger इज हेड ऑफ ऑल. तो अगर हम कैसे साबित करेंगे कि हेड है? तो अगर इसका मतलब ये अगर क्यू मनाger काम नहीं करे तो ये सारा काम नहीं करेगा, क्यू काम नहीं करेगा, टॉपिक काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा. तो हम इसको पहले क्यू मनाger को हम स्टॉप करते हैं. It is stopped, controlled. Okay, I am stopping the queue manager for now. It is stopping, and we see
You can stop by the command also, but I will give any very different lecture for that, because for all commands what you use and how you use. And here you can see that now I am not able to open anything. It is disconnected now. I am not able to anything like anything channel listeners and topic subscription, anything I am not able to open because it is down. It is now in disconnected state, is in a stopped state. So I am not as similar in a stopped state, so I am not able to open. Now when I am start the queue manager, queue manager, and I am able to see everything inside it. Then now you can see that everything is present inside it. You can see everything is present inside it. You can see, so everything is present inside it. So I can conclude here from here this queue manager is head of everything, topic, queue subscriptions, and queue manager is the queuing service and queuing capability. Now come to next for next topics. As you know, from queue manager we have to learn the queue, topic, subscription, channels, listener, services, everything you have to learn. Let's first start with the what is queue. What is queue and type of queue, everything. Let's first complete this. Then we'll go to the other topics. Now come to this. What is the queue? What is our message queues? We can tell it. Simply we tell it is a queue and we can message queue. Queue is a container of message. It holds message temporarily. Queue एक container है. You can understand it like that. एक box है. Queue is like a box and where we can store message. यहाँ पर हम लोग मैसेज को स्टोर करते हैं. ठीक है, मैसेज को हम लोग स्टोर करते हैं. मैसेज आया टेम्पोररी के लिए और वहाँ से चला गया. तब एक सिस्टम से मैसेज आया. यहाँ पर एक क्यू है, बक्सा है, इसमें मैसेज, इसमें दो गेट लगा हुआ है. एक इधर गेट है, इधर एक गेट है और एक इधर गेट है. ठीक है, और यहाँ से मैसेज आया, यहाँ थोड़ी देर के रुका और इधर से निकल गया. अगर यहाँ सिस्टम ये बी डाउन है तो यहीं पड़ा रहेगा जब तक ये अप नहीं होता है. ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसका से. तो हम लोग क्या पढ़े, क्यू एक बॉक्स है जहाँ मैसेज टेम्पोरली होल्ड करता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्यू, कितने प्रकार के क्यू होते हैं एक पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे. लोकल क्यू, अलियास क्यू, रिमोट क्यू, ट्रांसमिशन क्यू एंड डेलीटर क्यू. These are all queue and we will study in deep everything. Don't worry. First come on to local queue. Local queue is a only place where we can store message, physical storage. लोकल क्यू ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग मैसेज को स्टोर कर सकते हैं. उसका फिजिकल स्टोरेज होता है. हर लोकल क्यू का एक अपना कुछ खुद का स्टोरेज होता है. वी कैन पुट मैसेज एंड गेट मैसेज फ्रॉम द लोकल क्यू. लोकल क्यू से मैसेज को हम डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं. ठीक है, लोकल क्यू का नेचर होता है, परसिस्टेंट नेचर होता है. लोकल क्यू, लेट्स फर्स्ट क्रिएट द लोकल क्यू, देन वी विल सी क्यू. लेट्स क्रिएट द लोकल क्यू. Let's name it a first dot local. Before that I am going to giving you the important thing. Many time in interview people asked what is the system default queue for the local queue. So you know to remember that the system default queue for the local queue is system.default.local.queue. This is the default queue, system.default.local.queue. This is the one of the naming conventions that given by the IBM and they follow, and there is some properties inside it. While you creating the queue, there is the property sum inside this that is set by the IBM. It automatically takes this. तो कुछ प्रॉपर्टीज होता है इसके अंदर जो कि डिफॉल्ट क्यू है, इसके इसी तरह सेम टू सेम इसमें प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर देगा और क्रिएट कर देगा. लेट मी फिर नेक्स्ट, दिस इज द नेट. लेट मी फिनिश.
Now you can see the queue has been created. It is the first local queue has been created. Now come on, let me click on that. Uh, this is the queue name. This is the type. It is given a local queue. This is the put message and this is the get message that is allowed currently. This is the persistence nature, that is non-persistence, and this is the queue manager. This is the normal user type is normal. Let me first define clear all these things one by one. Okay. What is the mean by put message and get message? This is the first thing. Put message and get message is something like that. I already taught you. This is the queue, this is the box, something like that. This is the box. Let me add a box. I can add table, something like that. No, I cannot. Let me draw. Let me add a box. Okay. Let me go to home. Insert. This is the okay. Now this is the queue. You can consider this is the queue, and from here we can putting the message. From here I am getting the putting the message into this. No one not from here. I am putting the message into queue, and from here message is getting out. Okay, are you getting that? From here I am putting the message at the queue, and from here message getting out. Okay, so it is like that. The put get put and get something like that. Put means message getting inside the queue, and get means message getting outside the queue. Let me clear by this to you. If you are putting a message into the any queue, when a system A produce this message, okay, this message is required to the system B. So, and this is going to be passed through the MQ, that is queue. This is going to pass through the queue. It means it will first enter into the queue and it will go outside to the queue. पहले ये मैसेज ये क्यू में जाएगा, फिर क्यू से निकलेगा. तो जो मैसेज जा रहा है क्यू में, दिस इज द पुट, और जो मैसेज निकल रहा है दिस इज द आउट. फिर एक बार क्लियर कर देते हैं. ये मैसेज ए से मैसेज जो है जा रहा है एम क्यू में, किसी क्यू में. ये मैसेज कोई प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बी को चाहिए. ये एक क्यू के होके ये बक्सा होके जा रहा है. एक बार बक्सा में मैसेज इंटर किया, फिर निकल गया. जब इंटर किया तब हम उसको बोलेंगे पुट है, जब निकला तब बोलेंगे उसको गेट है. ठीक है, इसी तरह. तो अगर हम इसका गेट बंद कर दें, अगर इसको हम पुट बंद कर देंगे तो हम लोग क्या, ये बॉक्स में मैसेज पहुंचेगा ही नहीं. सिस्टम ए से भेजेगा लेट बॉक्स में पहुंचेगा नहीं, मतलब उधर ही कहीं उस तरफ वो फेल कर जाएगा. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर यू कैन पुट द इनविट. यहाँ से इनविट कर सकते हैं, इनविट करके अप्लाई कर सकते हैं. अगर इनविट कर दिए तो मैसेज जो है हम लोग डालेंगे लेकिन ये जाएगा नहीं. देखो पुट को इनविट किए हैं, मैसेज को हम डालते हैं बिकॉज यहाँ हम डाल नहीं सकते हैं पुट टेक्स्ट मैसेज 1 इट इज गिविंग कैन नॉट पुट द टेक्स्ट मैसेज. तो हम पुट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि बिकॉज पुट इज इनविटेड. पुट इनविट किया है मतलब हम इस क्यू में मैसेज डाल नहीं सकते हैं. यू कैन पुट इज इनविटेड बिकॉज वी कैन नॉट ऐड द मैसेज. ठीक है, ओके. तो अलाउ, लेट इट अलाउ. एंड बॉक्स है, बॉक्स में अगर हम यहाँ पर गेट है और यहाँ भी गेट है, अगर हम गेट जो अंदर हिलने का रास्ता है उसको बंद कर दें तो कैसे कोई व्यक्ति हिल पाएगा? नहीं हिल पाएगा. तो इस तरह से मैसेज भी नहीं हिल पाएगा. अब हम बात करते हैं गेट है, ये निकलने का रास्ता है. निकलने का रास्ता अगर हम बंद कर देते हैं तो कोई व्यक्ति तो हिल जाएगा, उसको मालूम नहीं है कि बाहर वाला बक्सा, बाहर वाला गेट बंद है.
हिल तो जाएगा, लेकिन हिलने के बाद अंदर जाने के बाद जो है वो उसको पता नहीं चल, वो वहीं पर फंस जाएगा और वहीं पर कैद रहेगा जब तक कि हम इसको गेट खोले नहीं, वो जाएगा नहीं। तो वी कैन इन्वेट फ्रॉम हियर, वी कैन इन्वेट द गेट also. Let me invite it. If I invited it, okay, when I am putting the message into that queue, when I put a text message 111 something like that, kuch anything message, when I put the message, you can refresh it from here. You can see the current queue that is this. You can browse this also message. You browse the message, browse message, okay. we, we cannot we can browse this from here, we cannot browse from that place, and because when we if for the local queue, if you inhibit the gate, we cannot browse the message. There is the some criteria set by the IBM. If for the local queue, if you inhibited the gate, then we cannot browse the message. Still message is present in that queue. So how can we see the message if the gate is invited? For this, alias queue comes into the picture. alias queue के लिए पिक्चर में आता है। हम लोग alias queue का गेट को इन्विट करके हम लोग मैसेज को देख सकते हैं। वो बात बताएंगे alias queue क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। Now come to persistence. What is persistent, and let it allow it. Now when I allow that, you can see the message. I can see the message, browse message. You can see this is the message what I have written. I can see why. Let's I will explain in alias queue even in details why this is not happening and everything in details. Let's come into the what is persistent and why it is, what does it mean. Also I have given in the note sections, you may see what is persistent and what is this, something like that. Persistent means message will not lost even the queue manager is restarted. तब अगर हम इसको persistent कर दें, यहाँ पर भी नॉन persistent रखा हुआ है, अगर हम persistent कर दें तो कोई मानते हैं कुछ ऐसा अनहोनी हो गया कि वो क्यू मैनेजर को रीस्टार्ट करना पड़ा, क्यू मैनेजर में मतलब सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ गया, तो हमारा मैसेज जो है कभी खोएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमारा नॉन परसिस्टेंट है तो ये मैसेज अगर किसी कारण से मैं अगर रीस्टार्ट करना पड़ेगा वो क्यू मैनेजर, तो ये मैसेज हमारा खो जाएगा मतलब पता ना कहीं वो गायब हो जाएगा। दिस इज द कन्फ्यूजन मेड बाय द IBM एंड लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू, हमको दिखाते हैं। हियर यू कैन सी इट इज नॉन परसिस्टेंट, लेट्स अप्लाई इट and let me restart the queue manager and see there you can see there is a one message present. When I restart it, it will lost because the nature of the persistence is non-persistence. So let me restart the queue manager, desktop controlled, okay. The queue manager is stopped. Now queue manager is in stopped state. Now let me restart it. When it got start, you can see the message has been lost because the nature of the queue is non-persistent. You can see here the message has been lost because the nature of the queue is non-persistence. So non-persistence nature of the queue lost the message if the queue manager is restarted anyhow. Let me make it persistence. Let me make it persistent, then apply. Let me put the message something like that. Put a text message A, B, C. I have put in the 3 messages. You can browse this. You can see from here. I have put the text three messages. Browse message. You can see from here A, B, B, and C, like that. And the nature of the queue now is persistence. You can see the nature of the queue is persistence. Nature of the queue persistence, it means if I restart the queue manager, anyhow it's some problem we can send, I restart the message queue manager, the message will not lost, it will still present in the queue. Let me restart the queue manager. Let me stop controlled, okay.
Now queue manager is in stop state, you can see here. Let me restart the queue manager. Start. The queue manager is turning. Let me browse the queue. You can see still the all three messages are present. Browse message. You can see still all three messages are present because because uh, it is persistence in nature. Persistent nature means if you restarts, it will not lost. Non-persistence, it will lost if you restarts. Okay. Let me give you on some or more properties of the local queue. ये now it is clear. Put message allowed means message when जब हम message डालते हैं क्यू में और जब मैसेज निकलता है तो गेट मैसेज, अगर पुट मैसेज अलाउ कर देंगे तो मैसेज को हम बॉक्स में डालेगा ही नहीं. गेट अलाउ कर दें, गेट अगर इनविट कर देंगे, सॉरी पुट इनविट कर देंगे तो मैसेज डालेगा ही नहीं. गेट इनविट कर देंगे तो मैसेज जो है वो डालेगा लेकिन गेट निकलेगा नहीं बॉक्स से, क्यू से. ठीक है. उसका से परसिस्टेंट नेचर मतलब कि अगर नॉन परसिस्टेंट रहेगा तो वो लॉस्ट हो जाएगा, परसिस्टेंट रहेगा तो वो लॉस्ट नहीं होगा. ओके. Now come to the extended property. Extended here you get max queue depth is 5000. यहाँ से हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हम सेट करते हैं. यहाँ से प्रॉपर्टीज क्या सेट करते हैं कि किसी भी एक क्यू है, क्यू मतलब बॉक्स, तो बॉक्स में कितना मैसेज रखने का क्षमता है वहाँ से हम डिसाइड करते हैं. बॉक्स में हम कितना मैसेज रख सकते हैं उसका कुछ ना कुछ क्षमता होता है. ठीक है. तो उसका हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं. यहाँ से 5000 इसको हम 50,000 भी कर सकते हैं. देयर आर सम लिमिट्स. उसके बाद हम नहीं रख सकते हैं. IBM ने सेट किया है कि कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, 10 लाख समथिंग लाइक दैट, something like on like that something. After that you cannot put, but we from here we can increase the queue depth like that. तो मैक्सिमम क्यू डेप्थ इज द क्यू इज द वैल्यू. मैक्सिमम क्यू डेप्थ वो होता है कि अगर कोई भी एक बॉक्स है, बॉक्स में कितना मैसेज रख सकते हैं, मतलब क्यू में कितना मैसेज रख सकते हैं. ओके. लाइक दैट यू कैन सी हियर फ्रॉम हियर. You can see from here all three messages present. Similarly, I can put 50,000 only. After 50,000, it will not come into box. It will fall into the deleter queue or the something like that failure queue. Because later we will discuss about the failure queue. Failure queue and deleter queue are the queue where the message failed is gathered. Now it is the maximum message length. What is maximum message length? Maximum message length is there is a when it is a box, any box. If you let it, if you there is for any box, let me get a box for you. Let me table this. Okay. Not exactly the box. Let me but okay. For it is considered a box. Okay. From here, from this side, message will. Let me consider this is a box. This is a box. Okay. From here message will go to inside the queue. From here it will go outside the queue. Okay. If you think that the message अगर कोई मैसेज है तो कोई भी बॉक्स है, लेटर कोई ना कोई एक स्पेस होगा, इसके साइज के बाहर नहीं अंदर जा पाएगा. तो दैट इज सिमिलर थिंग. कोई भी अगर कोई भी एक पाइप समझो, पाइप में कोई एक छेद होता है, उसमें अगर हम कोई भी एक फिक्स डायमीटर का चीज़ को हम उसमें घुसा सकते हैं, और उससे ज़्यादा घुसाते हैं तो क्या होगा, पाइप फट जाएगा. सिमिलरली दैट्स अगर हम सेम एक फिक्स साइज का, इतना साइज हम डिसाइड कर दिया, इससे अधिक भी हम इंक्रीज कर सकते हैं. एक फिक्स साइज डिसाइड करते हैं कि इससे अधिक मैसेज के साइज होगा तो पाइप में घुस नहीं पाएगा, यहाँ पर मतलब क्यू में घुस नहीं पाएगा, और क्यू में फटेगा नहीं. क्यू क्या होगा, वो मैसेज जो है वो फिर डेलीटर क्यू में चला जाएगा, क्योंकि वो मैसेज वो फेलियर क्यू में चला जाएगा, क्योंकि मैसेज वो फेल कर जाएगा. ठीक. ओके. ठीक है. नाउ कम टू स्टेबिलिटी डिफॉल्ट्स. दिस ऑल आई विल डिस्कस इन लेटर what is synchronized sensors, everything in details, you don't worry. And this is the cluster. I will give you a special class for you clusters, and this is the statics storage. I will give you in everything in detail, because this is going to be long sessions, and I am giving you everything in details for you.
For today, I have given you the what is the IBM MQ and what is the basic concept. Because let me summarize it for you. IBM MQ used to transfer message from one system A to system B. System A produces the message, system B consumes the message, and it is because it is done by the MQ. MQ is the intermediate which transform the message. It transfer the message from system A to system B, source system to destination system, and it can transfer from various formats to various formats, like the XML to the JSONs and IDOCs to the JSONs and so on. The formats you get as decided by you and set by the you. Okay. Next we will learn what is the queue manager. Queue manager is the head of everything. If he starts the if we stop the queue manager, then nothing will work. Topic subsystem. So queue manager head of all. Queue manager should be running a state to work everything like the queue, channels, listeners, and topic subsystem, something like that. After that we learn what is the queue and what is the type of queue, various type of queue. I will study every queue in details. Today I study the local queue. First we studied how to create the local queue. And we created a local queue, first dot local. For creating a local queue, to know a new and local, and I have to put the new queue name, and then after that there is some default properties present for the queue. It takes from this default property what should be the default value. तब ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो IBM सेट किया है कि इसके अंदर एक कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि नया क्रिएट करोगे उसमें ये इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है. So from there you can create these are the properties given by. Then I will taught you what is the put message. Put message means if you are giving आप मैसेज किसी क्यू में डाल रहे हैं, किसी बॉक्स में डाल रहे हैं और वो क्रिएटिंग में से निकल रहा है मैसेज, ठीक है. परसिस्टेंट है, नॉन परसिस्टेंट आई टॉट यू इन डिटेल्स व्हाट इज द मैसेज लेंथ एंड व्हाट इज द मैसेज क्यू डेप्थ, मैक्स क्यू डेप्थ आई रिटर्न टू यू, एंड व्हाट इज द open input count and what is the open output count. I will let me complete it and then I will complete this lecture by for today for now. What is the open input count, what is open output? Open input count means कि इस क्यू में let me इसमें कितना एप्लीकेशन अभी मैसेज को डाल रहा है और इसमें कितना एप्लीकेशन इससे मैसेज ले रहा है, ठीक है. तब लेटेस्ट एक एप्लीकेशन है जो कि इसमें मैसेज को डाल रहा है, कोई एक एप्लीकेशन है जो कि मैसेज को डाल रहा है, तो उसमें ओपन इनपुट काउंट 1 हो जाएगा. लेट मी पुट टू मैसेज, लेट मी if any application is if I will create a alias queue for you, you may see there is one input count because one application is putting the message into it. For जितना application मैसेज में डाल रहा है open input count उतना हो जाएगा, और जितना इससे application निकाल रहा है मैसेज that is the open output count. मतलब इस मैसेज को अगर 6 एप्लीकेशन का जरूरत है तो 6 एप्लीकेशन मैसेज इसको निकालेगा, ठीक है. 6 एप्लीकेशन मैसेज आएगा तो ओपन आउटपुट काउंट 6 हो जाएगा. अगर इसमें 30 एप्लीकेशन मैसेज डाल रहा है तो ओपन इनपुट काउंट 30 हो जाएगा. That is the thing, open input count and open output count. And current queue depth. What is the current queue depth? Depth means क्या होता है? Depth means कि उसमें अभी कितना मैसेज पड़ा हुआ है, ठीक है. मतलब अभी इसमें अगर हम इसको डिलीट करते हैं, let me purge it. How can delete? You have to delete message. You have to clear message. Clear. Okay, clear message. That's all deleted. Now current queue depth is 0 because all message I have deleted or something like that. It may go to, if application is linked, then it will go to the other applications, and if it is included 1 2 3 4 5 6, then it means that it is increasing this size. It means मतलब current queue depth like box है, box में मैसेज अगर पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. ओके, बॉक्स यू कैन कंसीडर क्यू एज ए बॉक्स. अगर कोई बॉक्स में मैसेज पड़ा हुआ है तो ठीक है, उसको डेप्थ हो गया. अगर 10,000 मैसेज पड़ा हुआ है तो उसको करंट क्यू डेप्थ 10,000 हो जाएगा, ठीक है. ओके,
Similarly like that. In next lecture I will give you the what is the LIA, Q, remote Q, everything in details, and slowly we will study everything in details, don't worry. And you will get everything in details slowly. You no need to be worried. And okay, let me